वेलकम टू माय चैनल देसी एंड इंटरनेशनल कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं लखमाजून। टुडे वी विल मेक लखमाजून। सो व्हाट वी नीड फॉर लखमाजून आई विल एक्सप्लेन यू। हमको लखमाजून बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो लखमाजून बनाने के लिए हमें 2 स्टेप में अलग अलग चीज़ें बनाने की ज़रूरत है। वी नीड टू डू लखमाजून in 2 steps. One steps we need for dough and 1 steps we need for other garnishes. So we will start first to make dough. हम पहले बनाएंगे इसकी डो, जिसके लिए हमें चाहिए 1 kg flour, 2.5 cup water, 1 tablespoon olive oil, 1 tablespoon yeast, 1 tablespoon salt, and the other setup we need 400 gram beef, parsley, 1 tomatoes, 1 onion, 2 pieces of garlic, 1 pepper, and here I have black pepper, salt, cumin, red pepper, and coriander. That we started to make dough. First of all we put water inside the flour. पहले हम इसमें आटे में पानी डालेंगे. Then we will add yeast and salt, and then we will put 2 spoons oil. So slowly we will mix this one. आहिस्ता आहिस्ता हम इसको मिक्स करेंगे. See viewers, our dough is getting ready. हमारा जो डो है तैयार होने जा रहा है. तो दोस्तों ये हमारी लखमाजून की जो डो है तैयार हो चुकी है. Our dough is get ready, so we will keep this one for 30 minutes. हम इसको 30 मिनट के लिए रख देंगे. So viewers, we will go to next step. हम जा रहे हैं दूसरे स्टेप में. उसके लिए हमें क्या करना है? We will make this all things grind and mix well together. So let's start. can see now our step 2 is ready. हमारा कीमा तैयार हो चुका है.
Now let's start to make لخماجون. So our dough is ready. We will make some balls like this. And we will gonna roll it. Now we will start to make bread. हम इसको रोटी की तरह बेल लेंगे थोड़ा सा. Our لخماجون is ready for cook. Now we will cook in oven 250 temperature and 15 minutes. हमारा लखमाजून तैयार है. इसको हम ओवन में पकाएंगे 250 दर्जे टेम्परेचर पे 15 मिनट के लिए. So let's check our लखमाजून. क्रिस्पी लखमाजून तैयार हो चुका है. आई होप सो यू विल enjoy my video. If you enjoy, you like my video, comment and subscribe my channel.